अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजुक यह वीडियो लेक्चर नंबर 3 सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बाय क्रिचॉफ्स लॉज यथ मज दिम एग्जांपल यमो यमन मज यूज करो क्रिचॉफ्स लॉज टू सॉल्व फॉर करंट यथ मज करंट खतर सॉल्यूशन छान यथ मज करंट खतर मीनस वुचन डिफरेंट रेजिस्टरों मज कचा करंट फ्लो गसान क्लियर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर रातुक लेक्चर मे रातुक लेक्चर अत यूट्यूबस पे सह वुचन गोडनेथ अम खतर क्या मन साइन कन्वेंशन यूज करने तम साइन कन्वेंशन तथ मज वन तो ये मज वन बह साइन कन्वेंशन वनकस कहें तक क्लियर वो सा फर्स्ट लॉ वन जनरली क्या वन फर्स्ट लॉ इनकमिंग करंट्स आउट गोइंग करंट्स इनकमिंग करंट्स इक्वल्स आउट गोइंग करंट्स ये सात तुम सर्किट सॉल्व कर फॉर अननोन करंट और सर्किट दी 35 वोल्ट बैटरी 3 ओम रेजिस्टर 2 ओम रेजिस्टर 4 ओम रेजिस्टर 40 वोल्ट बैटरी यह सर्किट ये बन ये सर्किट में नाव दिखुत A B C D E F and A क्लियर फर्स्ट थिंग क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यम पॉइंट्स थोन याद फर्स्ट थिंग क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही चीज कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ही कर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 35 वोल्ट बैटरी say I1 is current drawn from it I must draw I1 current ये गैसे flow along AB यस 40 वोल्ट बैटरी छे अम मज नेर ब्याख करंट that is say I2 ये वाति B पॉइंटस निश ये वाति A along A वाति B पॉइंटस ये वाति along C B पॉइंटस निश B पॉइंट बनो जंक्शन करो फर्स्ट लॉ यूज sum of incoming currents equals outgoing currents means I1 plus I2 will be equal to I1 plus I2 means यस ये 2 ohm resistor छु अम मज कचा करंट गैसे फ्लो I1 plus I2 क्लियर अम पतन पॉइंट एस निश गैसे बे डिस्ट्रीब्यूट along this F I1 along D I2 as per conservation of charge यूता चार्ज यमन फ्लो गैसे तुतु गैसे अत मज एंटर ति यूता चार्ज यमन फ्लो गैसे तुता गैसे अत मज यपर एंटर ति मीन्स सेम करंट गैसे I1 यथ मज फ्लो यीजा करंट अम मज द्राय सेम करंट गैसे यथ 40 वोल्टस मज वापस यीजा अम मज द्राय ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ फॉर एनी क्लोज्ड लूप समेशन ऑफ ऑल EMFs and all voltage drops is equal to 0 starting from here let us take this loop इस करो A पे start B B E E F and वापस A means for closed loop A B E F and A B E F and A करो second law is use that is KVL A पे B S युति गसो A पे B S कुन युति गसो अच्छे 3 ohm resistor यथ डायरेक्शन में करंट this is the direction of current this is the direction along which we are moving अच्छे clockwise move करान means A to B गसान अपरी करंट ते फ्लो गसान दोनों सेम डायरेक्शन यम साथ सेम डायरेक्शन आसे रेजिस्टरस निश that is fall in potential इस में रात को fall in potential is taken as negative minus 3 times I1 ची करंट यथ मजन 3 IR 3 into I1 अम पतन B पे ES कुन गसुन बे ति सो यही कंडीशन ये डायरेक्शंस में करंट छ डायरेक्शंस में that is fall in potential minus 2 times I1 plus I2 अम पतन यपर गो EF मज कहें FAS मज 35 वोल्ट बैटरी बट अत मज कित मूव कर फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मीन्स देयर इज राइज इन पोटेंशियल एंड राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव बेचन अत मज कहें इक्वल टू 0 गए राउंड यथ सर्किट्स क्लोज्ड सर्किट्स अम पत करो सॉल्व minus 3 times I1 minus 2 times I1 that is minus 5 times I1 minus 2 times I2 equals minus 35 तोड़ में आपको minus cancel 5 I1 plus
2i2 equals 35. ये बने इक्वेशन नंबर 1. ये वेरिएबल्स अस निश आसान तीच इक्वेशन बनान सर्किटस मज चूंकि ये निश जी वेरिएबल इसलिए बनन जी इक्वेशन. इक्वेशन दोम बनाने ब्रोट स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. युथे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कोर स्टेप नंबर 2 चूज लूप closed loop and use shabash KVL to form equations. It can be equation bano yithe can chi banani equation kıç equation banan as nish that is depends on number of variables. Yite variables asan तीस equation chi banan. Clear? Yetin छ z variable इसलिए बनाओ अस z equation. वह छ दयम लूप चूज करन दयम लूप कुस करन चूज यह छ पानस तम चाहे तु a b c d e f a करियो चूज means whole loop or b c d e and b that is loop number 2 भावितनसु means B, C, D, E and B वापस means this loop. Clear? Which was loop नहीं में बनेगा B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. ये है loop च solve कर. ये loop किस करेंगे solve? आत्मजन च करन KVL apply. KVL apply करने खातिर B पे करो start. B पे CS को नहीं थी गसो. ये च B पे CS निश current. Opposite directions move karan, that is rise means positive 4i2 this will be positive. This is the rise in potential. C pe ds nish acha is gasan plus to minus means higher potential to lower potential, that is drop 40. Clear? D pe ds tam chun kahin cheez E pe bs tam 2 ohm resistor opposite asmaz current here wasan bon ashi bona here khasan means opposite go plus 2 times i1 plus i2 equals 0 be shun atmazan kahin ti cheez. Clear? 4i2 2i2 be 2i1 2 times i1 4 times i2 plus 2 times i2 that is 6 times i2 equals 40. ये बने इस दयम इक्वेशन नंबर 2. अगर इस थोड़ा वो सिंप्लीफाई करो बिकॉज ये 2 कॉमन फैक्टर्स यानी कि 2 से करो डिवाइड बोथ साइड्स ये बने i1 प्लस 3 times i2 equals 20. Clear? 3 5i1 2i1 2i2 35 i1 plus 3 times i2 equals 20. ये बने इक्वेशन नंबर 2 अथवा ये इतना इक्वेशन नंबर 2. वन चेस करन इक्वेशन फर्स्ट टू द सेकंड सॉल्व. इक्वेशन फर्स्ट टू द सेकंड करन सॉल्व. डिफरेंट मेथड युस त मेथड सहल गसे सुई मेथड यूज करन सॉल्व करन खातिर फॉर i1 एंड i2. युस त 10th मज मेथड करन दैट इज elimination method so they to use kit elimination is karo multiple we say then 5 times i1 then i1 means I say 5 से multiple kit. Clear? if you 5 से multiple karo and pat is common as pat karo subtract kit या यह 2 times that is 3 times that यह करो 3 से multiple यह करो 2 से multiple. Clear? I'm पतन करो इम solve युथु इम solve करने खातिर यह खतर होमवर्क मीन्स यह पाने कर सेल्फ पाने कर सॉल्व बस दपान युस तुम मेथड इजी गन सॉल्व कर डिफरेंट मेथड हेकान सॉल्व कर इक्वेशंस ये तुम निश मेथड्स अवेलेबल तम करो तुम सारी यूज युस तुम सहल बास सॉल्व कर क्या टाइम तथन कम युस तुम सहल बास सॉल्व करने खतर तथ पे इंशाल्लाह दिमो अलग टॉपिक 11th मज सारे खुद सहल मेथड कुछ गसान यूज टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. Clear?
तब दिमो अलग फिलहाल हेकु तुम पान तेतनस कर दैट इज फर्स्ट सेकंड कर सॉल्व क्लियर युतु इक्वेशन बने तम पतन number of variables then solving the equations for next solving the equations for unknown parameters खुद solve करें clear next that is question number 2 means this question what was the question बस कर explain good question a per b 4 ohm resistor a per c 1 ohm resistor and 10 volt battery a per d 4 ohm resistor b to c 2 ohm resistor c to d 2 ohm resistor and there is battery 5 volt connected across b and d along e clear what is yet mazan current unknown currents find unknown currents find question sheet can find current along all branches या है अतन लिखित जे along every resistor प्रथ कुन resistor मज कजा करंट फ्लो गसान ये क्वेश्चन सॉल्व करने खतर क्या वन में फर्स्ट गोडनिश कत क्या करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट वार्थ ध्यान ये 10 वोल्ट बैटरी लेट अस सपोज अतन द्राय I1 करंट क्लियर चलो I निमो इस करंट इतनस I करंट युथ यह पॉइंट एस निश वात अमिस ज वेज ज रास्त आउट गोइंग खतर अगर फॉर एग्जांपल यथ डायरेक्शनस मज I1 करंट द्राय बचे कजा करंट I माइनस I1 सो नेरी यथ डायरेक्शनस मज क्लियर वार्थ ये सात तुम वापस ये 10 वोल्ट बैटरी निश करंट गस वात I अमिस निश अगर करंट I वाज अमिस निश बे वापस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही युथ यह I1 यपर पकी वात पॉइंट B एस निश अम पे डिस्ट्रीब्यूट कर बल्कि योर 5 वोल्ट बैटरी अम मज ने ब्या करंट दैट इज I2 क्लियर I2 करंट द्राय मज यम दोनों गसन मिक्स I एंड I2 यम गसन यम छ इनकमिंग दिस इज इनकमिंग करंट दिस इज आल्सो इनकमिंग योर छ I1 पकान योर छ I2 पकान यम गसन दोनों मीट पॉइंट B एस पे पॉइंट B पे गसन यम C एस कुन कूचा करंट गसी अपर एट दैट इज I1 प्लस I2 वार्थ क्लियर योर छ I माइनस I1 पॉइंट D एस निश युथ यह वात अम पतन गोड पॉइंट C बुथ पॉइंट योर वोज I1 प्लस I2 क्लियर युगुन कचा करंट ने योक नेर करंट I करंट क्लियर क्या कि अम द्राय I करंट द्राय अम I करंट वात अमिस निश बाकी कूत बचो वो ये I1 प्लस I2 अम गो माइनस I मीनस जिस 2 ओम रेजिस्टर अत मज करंट I1 प्लस I2 माइनस I क्या माइनस I द्राव यथ डायरेक्शन मज करंट पत यु पॉइंट D एस निश वातान ये इनकमिंग आउट गोइंग कचा गस आसन ये 5 वोल्ट बैटरी मज द्राय करंट दैट इज I2 वन वो तीचा I माइनस I1 दिस AD करंट along AD CD प्लस I1 प्लस I2 माइनस I माइनस I1 अत बचो सिर्फ I2 तो यथ सर्किटस मज वात I2 मीनस अम द्राय I2 करंट अत मज बोज इन साथ यह कंडीशन तुम सेटिस्फाई गसी दैट मीनस करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही करंट डिस्ट्रीब्यूशन गो मीनस फर्स्ट लॉ मोकलियो अतन गो फर्स्ट लॉ नाउ वन सेकंड लॉ कर यूज चूंकि
अस बना यतन त्रे करंट I1 तो I2 मीनस अस बना त्रे इक्वेशन बनाने त्रे लूप्स करें कंसिडर यु त्रे इक्वेशन बनाओ तुम त्रे लूप्स करो कंसिडर पत करो सॉल्व तम त्रेनो इक्वेशन वो मसले कुस लूप निमो पानस तम मे कुन थो नजर A B C A फॉर लूप गोडनिक लूप निम बह A B C A मीनस दिस लूप A B C अपर A पे B B पे C पे A वापस त्रो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट इज सेकंड लॉ वार थोन ध्यान राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव यम सात I1 वो 4 रेजिस्टर अतन I1 डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपर पकान दैट इज फॉल इन पोटेंशियल इज नेगेटिव 4 टाइम्स I1 minus 4 times I1 युथि B S निश B पे C S कुन गसन B पे C S कुन डाउनवर्ड करंट डायरेक्शन उकन पकान सेम डायरेक्शन मीन्स फॉल minus 2 times I1 plus I2 C पे A S कुन पकन C पे A S कुन युथि कुन पको बे पोटेंशियल ड्रॉप minus I गई 1 resistor 1 ohm resistor 1 into I plus 10 equal 0 ये करो थोड़ा बहुत सॉल्व minus I minus 4 minus 2 that is minus 6 I1 I2 2 minus 2 times I2 equals minus 10 तोर मे अपर minus नीट सारनी कॉमन I plus 6 times I1 plus 2 times I2 equals 10 ये बने इक्वेशन नंबर 1 सेकंड दयम दैट इज करन कंसिडर की लूप A C D A फॉर लूप A C D A ये लूप कंसिडर करने खतर कत पे करो स्टार्ट A C C D D क्लियर A पे C S कुन गसो अतन 10 वोल्ट बैटरी अत मजन गड पॉजिटिव टू नेगेटिव गसान मींस फॉल इन पोटेंशियल इज -10 अम पतन 1 निश राइज इन पोटेंशियल मींस प्लस I सेम डायरेक्शन या डायरेक्शन मूव कर तो डायरेक्शन में करंट मूव कर मींस -2 times I1 plus I2 minus I opposite that is plus opposite which go plus 4 I minus I1 equals 0 करो simplify I 4 times I 5 4 I that is 4 plus 1 that is 5 minus plus 5 plus go 7 means 7 times I 7 times B1 4 2 and 1 that is 7 I clear now I1 minus 4 minus 2 that is minus 6 I1 I2 2 minus 2 times I2 minus 10 equals 0 minus 10 तारुन अपोर ये बने plus 10 ये बने इक्वेशन नंबर 2 क्लियर नेक्स्ट इथे कन तो ब्याक लूप निन दैट इज दिस B E D and B वापस B E D and B युतु ये लूप नी अतन बन ब्याक इक्वेशन तो स्टार्ट करो फ्रॉम B ट्रैवल टुवर्ड C अच्छन कहीं रेजिस्टर B पे एस निश बैटरी सोर्स अच्छ पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस ड्रॉप इज 5 वापस राइज plus 2 I1 plus I2 minus I plus 2 I1 plus I2 equals 0 5 तारुन अपोर I1 2 times I first I 2 times I minus now I1 2 times I1 2 times I1 4 times I1 and positive sign I2 2 times I2 2 times I2 that is 4 times I2 equals 5
ये बने अस त्रेम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3. इन त्रेनवे इक्वेशन अम पतन सॉल्व कर वो सॉल्व कित करो वार थे ध्यान. अगर तो इक्वेशन फर्स्ट तो सेकंड उस 6i1 6i1 2 2 एड दोन कर तुम नीर आई तत यु आई द्राव तम पतन बे सॉल्व कर बेस इक्वेशन तत नीर i1 नेक्स्ट i1 आई त्रावन फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में तत नीर i2 त्रे इक्वेशन बने अम पे त्रेनवे इक्वेशन सॉल्व कर नजर थी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा वो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड यु एड करो बन i1 plus I plus I that is 8 times 7 plus 1 that is 8 times I 7 plus 1 that is 8 minus 6 plus 6 cancel minus 2 plus 2 cancel 10 plus 10 that is 20 so I equals 20 divided by 8 ये द्राय आई क्लियर यु आई द्राव अम पतन वो i1 गसा कुन शे इतन वो अतन गस कैंसल यु आई द्राव अगर तुम i2 i1 गस कैंसल तम इक्वेशन i2 गस कैंसल तम इक्वेशन वनकस क्या कर बस मे आई युक वैल्यू पाई क्लियर आई युक वैल्यू मे पाई वार थे ध्यान बनी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 मज 6i1 ये 4i1 बहुत यहां कैंसल कर यह कैंसल अगर यह कैंसल कर मे वो वन अगर तुम बदल कह मेथड तगान तुम हेकू सह क्लियर उस तुम मेथड सहल बास सू मेथड अत खतर कर अलग लेक्चर प्रिपेयर तम पे वो कित सॉल्व करान क्या मुश्किल पे बुथ बेसिक मेथड कर यूज तगान सारे को सहल मेथड यूज गस टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस सू मेथड यूज कर क्लियर यु आई द्राव अम पे कर दोन मज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 यम इक्वेशन कर सॉल्व यु तुम यम इक्वेशन सॉल्व कित करो 6 यह 4 यह गस कैंसल मीन ये 6 सत कर मल्टीपल ये 4 सत कर मल्टीपल करो 6 सत मल्टीपल करो 4 सत बन 4 7 28 I 4 7 28 minus 24 I1 minus 4 8 I2 equals 4 10 40 ये करो 6 सत मल्टीपल 12 I plus 24 I1 6 4 24 24 I2 6 5 30 I'm about addition which gets to you cancel 28 minus 12 that is 16 I clear plus minus that is plus 24 that is 16 I2 equals चूंकि ऐसे कोई add 4 plus 3 7 70 clear now I want to show 20 by 8 that is if you have 20 divided by 8 throw 8 1 8 to 16 2 into 20 that is 40 16 I2 70 minus 40 that is 30 so I2 30 divided by 16 divide 15 divided by 8 this is I2 if I1 I2 draw M throw equation number first is I is 20 by 8 6 times I1 2 times 15 divided by 8 equals 10 20 divided by 8 plus 6 I1 15 divided by 4 equals 10 6 I1 equals 10 minus 20 by 8 minus 15 by 4 solving for I1 you will find the value of I1 if you I1 here that will be the result so I1 I2 I3 dry time patan
युतुय छुन क्वेश्चन क्वेश्चन छु समझुन मीन्स 4 ओम रेजिस्टर मस कचा करंट गस I1 दैट इज उस दिन वैल्यू ने ये 4 ओम रेजिस्टर मस कचा करंट गस I minus I1 I is 20/8 minus this I1 यमन दोन minus next this 2 ohm resistor I1 plus I2 that is I2 this and I1 यमन दोन addition 2 ohm resistor मस I1 plus I2 minus I यमन दोन sum minus करने that is this I minus I1 I minus I1 that is 4 and so on clear ये करन इतनस solve करन I1 खतर कर solve तम पतन this different resistor नजर कथ मजन कचा करंट थयस assume कचा करंट करेस then ऐसा कोई दिवन नजर दियो AB युस छु resistor AB portion मज युस resistor छु सु छु 4 ohm resistor 4 ohm resistor मज छु I1 करंट I1 अस द्रा वैल्यू सुले गतनस इथे कन A पे C तम छु 1 ohm resistor अच I द्रावस 20/8 मींस एस 20/8 एम्पीयर करंट इथे कन छु A पे D तम छु 4 ohm resistor 4 ohm resistor मज I minus I1 सु वैल्यू ले गतनस मींस यम चीज छु तद एस क्वेश्चन तद एस रेजिस्टर डिफरेंट दिस या एस रेजिस्टर सेम दिस पता सनित वनसा युस BC पोर्शन में रेजिस्टर 2 ohm छु आत मज कचा करंट छु फ्लो गसन प्रोसीजर छु ये क्लियर अगर आत मज के प्रॉब्लम है तो एक कमेंट्स में मैं सो प्रॉब्लम डिस्कस वनित तम पत कर बस बे डिस्कस क्लियर दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बाय किरचॉफ्स लॉ क्योंकि छु खाली 12th खतर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम छु करन तमिस खतर छि बेसिक क्लियर तो अम पतन छु आत मजन वारिया क्वेश्चन तो करें ताकि गस फुली अंडरस्टैंड फुली वैसे छु इजी बट क्वेश्चन क्या छु करन मिसाल इसमें वुंट ओस वना दैट सॉल्विंग these types of equations यम गसन आसिन क्विक तगन एमस यम क्विक तगन तमिस लगन 1 मिनट या 2 मिनट 1 मिनट ते लगन एमस तत क्वेश्चंस क्लियर दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बाय किरचॉफ्स लॉ दिस इज नेक्स्ट लेक्चर आसे एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेट स्टोन ब्रिज मोस्ट इंपोर्टेंट वेट स्टोन ब्रिज